Hey guys, today I'll guide you about the AWS Certified Solution Architect Associate CA03 update, how to clear the exam in first attempt, my tips and keynotes. Uh, I'll do this vlog in Urdu so that I'll have more audience. Uh, I'll try to insert the subtitles as well. So जब आप ऐसे ऐसे एग्ज़ाम के ऊपर प्रिपेयर करना शुरू करेंगे तो आपका जो पहला स्टेप है दैट यू हैव टू गेट नॉलेज अबाउट द स्कोप ऑफ द सर्टिफिकेशन एंड हु शुड अटेम्प्ट इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये आइडिया नहीं है कि इस एग्ज़ाम को किसने अटैम्प्ट करना है तो फिर एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने का कोई ख़ास बेनिफिट नहीं होगा, इवन अगर आप पास भी कर लें तो ये जो तीन AWS ने क्वालिटीज़ या एट्रीब्यूट्स मेंशन किए इनमें से एक आपको होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। आइदर यू हैव एक्सपीरियंस इन AWS टेक्नोलॉजी, इफ़ यू हैव दिस डायरेक्टली गो अटेम्प्ट द एग्जाम, या स्ट्रॉन्ग ऑन प्रम IT एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैपिंग ऑन प्रम टू क्लाउड। अगर ये वाला ऑप्शन है तब भी यू कैन अटेम्प्ट टू द एग्जाम, बट आई वुड रिकमेंड दैट गो फॉर द सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर फर्स्ट। और थर्ड इज़ के आइदर यू हैव एक्सपीरियंस वर्किंग इन अदर क्लाउड सर्विसेज। अगर पॉइंट नंबर 2 या 3 इन दोनों में से एक है तब भी आई recommend you to go to the certified cloud practitioner first. एग्जाम की चार डोमेन्स हैं एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। यू शुड बी एबल टू डिज़ाइन सिक्योर आर्किटेक्चर्स, मतलब सिक्योरिटी यहाँ पे आपकी ब्रेड एंड बटर बन जाएगी, एंड दिस कंप्राइजेस 30% ऑफ योर एग्जाम। देन यू शुड बी एबल टू डिज़ाइन रेजिलियंट आर्किटेक्चर्स, इसमें आपकी हाई अवेलेबिलिटी, फेल ओवर और बाकी तमाम जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे कवर हो जाएंगी। 26% ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। थर्ड डोमेन इज डिज़ाइन हाई परफॉर्मिंग आर्किटेक्चर्स। तो इसमें you have to design, you should be able to design compute optimized architectures. You have to design the architectures which has less operational overheads, and you have to design the architecture which are simple, right? So ये सारा का सारा यहाँ पे कवर होगा, and then you have to design the cost optimized architectures as it's clear that your architecture has to be cost effective. मतलब जस्ट इमेजिन अगर आपका आर्किटेक्चर सिक्योर भी है, रेजिलियंट भी है, हाई परफॉर्मिंग भी है, और इफ इट्स नॉट कॉस्ट ऑप्टिमिस्टिक तो उसको कोई एज अ सोल्यूशन आर्किटेक्चर दैट्स नॉट एन आइडियल सोल्यूशन। और यू विल हैव द सिनेरियोज विल दे मेंशन के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका बजट बहुत कम है, एंड देन यू हैव टू डिज़ाइन द आर्किटेक्चर एज पर देयर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे एक टिप है कि ये आपकी AWS की सर्विसेज नॉलेज का क्विज नहीं है। नो वन इज़ गोइंग टू आस्क यू के how many okay, what is the object based storage, or what is the file based storage, what is the SMB protocol based storage. No one is going to ask these straightforward questions. ये सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर में ये वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो इसलिए जो मेमोरी है, मेमोराइजिंग ऑफ द सर्विसेज, दैट कम्स more into business when you go for the certified cloud practitioner exam CCP. इस एग्ज़ाम में AWS needs to determine how do you apply the various services in given scenarios or set of scenarios. So you should have in-depth knowledge about the services. Second step is that you have to identify the right course to start the study. There are many options available online. I'll not vote for any option. There are few good courses on Udemy. There is a good course in WizLab. मैंने तो ये दो sources देखे, एक क्लाउड गुरु का कोर्स भी बुरा नहीं है। You can choose whatever you like to choose, लेकिन जो इसमें मेरी recommendation है that you have to select for an option which has more hands-on exercises and more demonstrations, and the instructor who is giving you examples. जो the instructor who is hands-on and who is really an architect or a professional, let's say, he'll always give you examples, real-time scenarios. He will explain his concepts with the help of some real-life examples, use cases, scenarios, diagrams. Whereas कुछ ऐसे इंस्ट्रक्टर भी हैं जिनका बैकग्राउंड AWS में, टेक्नोलॉजी में नहीं है, they are plain like you can say IT professionals, and they are posing themselves as professional, and they are selling this content over line. तो PowerPoint presentation से कुछ slides को रख के उसको सिर्फ कंटेंट को पढ़ देना, that is not a course. I don't think that that's a course. They are just selling you their items. So be cautious while choosing the items. While choosing the course, sorry. तो कोर्स की सेक्शन में आपने काफ़ी जो है ना वो
आप you have to be careful and इसमें एक जो second important item है that you have to keep an eye on the AWS documentation. Uh, do not just rely on the trainings. Try to read something from the AWS documentation as well, especially about the key services I'll mention. There is a like buzzword in the market which is called guaranteed dumps and 100% pass guarantee. This there is no such thing. It's against fact. AWS certification is not straightforward. You should not depend on the brain dumps available on the market. You have to rely on your own skills because time बहुत कम होगा आपके पास एग्जाम में. I'll explain you in the section of exam. Get hands on. That's my recommendation. If you're not hands on in AWS, try to be hands on, and having an experience in AWS is always recommended to before opting for that exam. Now, there are few key services that are most critical, even though it covers all of your AWS landscape. But there are some services which they keep as just distractors in the questions and scenarios. Few services are most important. For example, storage, networks, database, compute, serverless. When I say storage, it starts from S3, and then from S3 it goes up to S3's policies, the bucket policies, and then the permissions, and then the use cases of S3s, and then the costing options and S3 storage classes. So it goes up to that level. और फिर उसके बाद जब आप EFS for example फिर you go for EFS, फिर FSX Luster, EBS, then EBS के volumes, फिर उसके use cases, फिर उसकी cost. तो इस तरह से आपको drill down करना है सारी services के अंदर. Same goes for your networks and database and compute. Then step 3 is that's highly recommended that you book your exam. Some people start studying and then they book their exam, and some people they book their exam and then start studying. In my opinion, the first option is viable. Give yourself 8 to 12 weeks. 12 weeks काफ़ी optimum time है. 8 to 12 is good. और अगर आप 2 घंटे भी निकाल लें डेली स्टडी करने के तो वो काफ़ी काफ़ी आपके लिए जो है ना काफ़ी से ज़्यादा होगा. Do not try to push yourself. कुछ लोग कहते हैं कि हम 4 वीक के अंदर सर्टिफिकेशन निकालेंगे. अगर उनका ऑलरेडी 3-4 years का एक्सपीरियंस है और एंड दे नो अबाउट सर्विसेज, फेयर इनफ. लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है एंड दे ट्राई टू डू इट इन लाइक 3 to 4 weeks, वो बेसिकली काफ़ी अपने आप को उनको स्ट्रेच करना पड़ेगा. दिस इज़ नॉट माई स्टाइल. आई कांट डू दैट. Then you have to keep an eye on the प्रैक्टिस टेस्ट. स्पेशली विजलैब के टेस्ट मैं रिकमेंड करूँगा. बहुत वेल क्राफ्टेड हैं, उनके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं. ये क्वेश्चन एग्ज़ाम वाले नहीं है, लेकिन इन क्वेश्चंस को देख के आपको फ्लेवर मिलेगा कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो दे कंबाइन मल्टीपल स्नैरियोज इन अ क्वेश्चन. एग्ज़ाम डे की मेरी रिकमेंडेशन ये कि you should stop study at least 12 hours before exam. Recommended तो ये कि 24 hours पहले आप stop कर दें and just try to relax yourself. Remember जो आपका जो brain है it's a super computer, और उसको उससे अगर आपको best performance लेनी है तो आपने उसको relax करना है, cool down करना है. So then it will give you the best performance. अगर आपका brain जो basically आपकी thinking power है वो if it's under stress तो वो बहुत ही बुरी performance आएगी. तो अगर आप पैनिक कर गए तो इवन दो इफ़ यू नो एवरीथिंग यू विल डेफिनेटली फेल. यू हैव टू बी रिलैक्स्ड. एग्ज़ाम में 65 क्वेश्चंस होंगे, 140 मिनट्स मिलेंगे, इंक्लूडिंग योर प्रॉक्टर टाइमिंग. जो प्रॉक्टर शुरू में टाइम लेगा आपकी आईडी वेरीफाई करेगा, इंक्लूडिंग दैट. सो ऑन द ग्राउंड यू विल गेट सम 129-130 minutes for 65 questions. So it's approximately 2 minutes per question, and few questions are so long that you may have to spend 1 minute just to read the question, and then you'll be and you will end up having 60 seconds to answer the question. So that's crucial. So your time management could be a challenge. So make sure कि जब आप स्टार्ट करें एग्जाम को तो जो कुछ आसान क्वेश्चन हैं आप उनको पहले अटेम्प्ट कर लें, और जो बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो आप उसको एंड में रख सकते हैं. कुछ लोगों के लिए टेक्निक वर्क करती है, कुछ लोग के लिए टेक्निक वर्क नहीं करती है. इफ़ यू थिंक दैट यू आर कॉन्फिडेंट यू जस्ट गो इन अ फ्लो, एंड इफ़ यू हैव टाइम, like if you manage to save like 10 minutes
you should go back and uh, review the questions जहाँ पे आपको डाउट है. तो let's suppose if you have 20 questions, क्योंकि मैंने ऐसे ही किया था कि अगर 20 questions हैं 15 questions हैं where you were doubtful, you just mark their numbers, go back, okay, try to again assess your answer. So that's on your exam day, and that's more important. So I am planning to design a course जहाँ पे मैं कुछ concepts को explain करूँगा in very easy language with all the tips and tricks and and the core things जो बहुत से मैंने नोट किया इंस्ट्रक्टर्स मिस कर जाते हैं कि ऑडियंस को इंगेज करने के लिए वो कोर कॉन्सेप्ट्स को भी उस तरह ही कवर करते हैं जिस तरह वो एक आम कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे होते हैं, और जो एक आम स्टूडेंट है वो उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, स्पेशली वो लोग जो AWS सीखना चाहते हैं. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट that series soon, but I request everyone to subscribe and like. So that's the summary. Last tip ये है कि C03 में there are lengthy questions, and each question might cover multiple scenarios. Like you you should not just depend on like one scenario कि आपके question में एक problem पूछा जाएगा कि let's suppose आपका end user है, एक client है on prem पे, they have uh, NFS based storage, or you have to migrate it to AWS. So what could be the answer? That's one scenario. लेकिन वो मल्टीपल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, लाइक वो उसमें ऐड कर सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चन के अंदर. वो प्राइवेट सबनेट को नेटवर्क ट्रैफिक क्यों राउट नहीं हो रही है वो उसको ऐड कर सकते हैं, और साथ उसके वो कॉस्ट को ऐड कर सकते हैं. सो एक क्वेश्चन की एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे. क्वेश्चन माइट गिव अ सिनेरियो कवरिंग अ प्रॉब्लम सच एज द instances. Now they are not saying EC2 instances. Uh, they are not saying anything. They're just saying instances in private subnet could not receive the traffic from internet and are in operation after 10 p.m. even there is no usage. So it's like इसको मैंने briefly टाइप किया, इतना दो लाइन में नहीं होगा. कभी वो इसी क्वेश्चन को 4 लाइन्स में भी पूछ सकते हैं just to confuse you. So if you try to focus on this question, you'll get to know that there are two problems in a scenario. Uh, so basically, the problem number one is that the private subnet could not receive the internet traffic, and they are also in operation after 10 p.m. even if there is no usage. It means that they are just running, and you're paying for your compute resources even if you're not using it. So basically, that's cost. So you have to resolve two problems, and answer could be out of multiple scenarios that adding the correct route in the route table. Uh, it's one of the reasons that your private subnet could not receive traffic. There could be other reasons as well. Your instances could not have a connection to the uh, public subnet, which might not have a public IP address and which might not having a public route to the internet gateway. And then you'll have to add a cloud watch alarm to stop the instances during nighttime. That could be one of the solutions, that you want to stop those systems at the night time and start in the daytime. So this is the flavor of questions. This is the kind of questions they ask. So hopefully I've tried to explain things, and I believe I'll try to cover more details in further sections. So thanks for watching it.